Hey everyone, welcome back to the channel Unfiltered Me. If you are new here, I am a NEET aspirant currently pursuing nursing. Yes, I am a dropper, but my journey is slightly different because nursing studies take up a lot of time and I don't get enough hours for NEET preparation. So, this is going to be a kind of my strategy video. So right now my nursing internal exam are starting from 8th September. So I have very limited time, but I have realized if I keep waiting for the perfect time, I will keep delaying. So I have decided to start now with a solid plan. So here is the plan I am following. For biology, I am doing one short lectures only to save my time. And in physics, I will follow alakh sir one short lecture for quick concept and revision, and also MR sir one short lectures for extra clarity and last minute revision. For chemistry, my chemistry is not good basically, and last year I have not cleared my concept in chemistry. So I will go with long lectures, detailed lectures because I need deep understanding in chemistry. So during my internal exam session, I will start botany because it will easy for me to start biology in this hectic schedule. Right now I will start class 11 botany. I am following Tarun sir half neat. In this series there are 11 lectures and my target is to complete them in next 15 to 20 days. Let's see what happens. Balancing nursing and NEET preparation is not easy, honestly, but I know why I started and I am not giving up. Even if I can't study for 8 to 10 hours daily, I will make every hour count. If you are on the same boat, remember a small consistent step matter more than random big efforts. And guys, this is just the beginning. I will keep sharing my real prep journey with you all, the wins, the setbacks, and the strategies that work for me. If you found this helpful and relatable, don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching, guys. बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट एंड आप लोग भी अगर ड्रॉपर हो तो मुझे भी अपने स्ट्रैटेजीज बताओ कि आप कैसे कर रहे हो, और अगर मेरा स्ट्रैटेजी पसंद आया तो कमेंट में बताना. एंड फाइनली मैं वन शॉट भी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है. बाकी बच्चों के पास अगर 8 महीने 9 महीने अगर मैं है तो मेरे पास अभी जस्ट हाफ है. समझ लो 4 महीने ही मेरे पास पड़े हुए हैं, तो इस ड्यूरेशन में लॉन्ग लेक्चर्स आर नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी, इसलिए मैं शॉर्ट लेक्चर्स पे शिफ्ट हुई हूँ. बायोलॉजी और फिजिक्स मेरी अच्छी है, केमिस्ट्री काफ़ी ख़राब है मेरी, तो केमिस्ट्री में मैं लॉन्ग लेक्चर्स ले रही हूँ. एंड वन शॉट से करूँगी, एनसीईआरटी करूँगी, फुल कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के देखूँगी. एंड लॉन्ग लेक्चर्स देखने की जगह मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी. और अगर आप लोगों को मेरा स्ट्रैटेजी पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट गाइज.